الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. इसको ऑन कर दिया ना? ठीक। बात चल रही थी कल दुनिया की और दुनिया का निज़ाम किस तरह चलता है। कल बुजुर्ग बता रहे थे कि जो दुनिया का मरीज है, दुनिया की मोहब्बत का जो मरीज है, जिस तरह दुनिया हाथ आती है लेता है, वो उसका ख्याल नहीं करता। चाहिए चार्ज है नहीं। दुनिया का मरीज, दुनिया की मोहब्बत का मरीज जिस तरह दुनिया हाथ आती है लेता है, उसको उसका ख्याल नहीं होता कि खुदा से राजी है या नाराज। ये कहता है कि बस दुनिया आती जाए, दीन की कुछ फिक्र ही नहीं रहती। बावजूद आखिरत के कायल होने के कभी अमाल में आखिरत याद नहीं आती, ना इसके लिए कुछ सामान की फिक्र होती है। हालांकि पता होता है कि आखिरत आने वाली है, और लेकिन उसका वो कायल नहीं, कायल तो होता है लेकिन उसमें लगता नहीं। किसी को अगर आखिरत का ख्याल आया भी तो उसी वक़्त तक रहता है जब तक दुनिया सलामत रहे। अगर दुनिया का नुकसान किसी वजह से हो गया तो वो आखिरत को खैरबाद कहता है। गोया ये मरीज खुदा की इताअत व इबादत महज इस खुशामद से करता है कि वो इनकी दुनिया को संवारते रहे, और अगर दीन पर अमल करते हुए इत्तेफाकन दुनिया बिगड़ जाए तो ये खुदा से भी बिगड़ बैठता है। हमेशा दीन पर दुनिया को तरजीह देता है, गो किसी को यह मर्ज आला दर्जे का न हो, मगर जिस दर्जे का हो वो मामूली बात नहीं बल्कि बहुत सख्त चीज़ है, क्योंकि इस अदना दर्जे का बढ़ जाना क्या मुश्किल है। उर्दू समझ में आती है? तो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया का मरीज है, दुनिया की मोहब्बत का मरीज, अगर पहली बात तो ये है कि वो जिस तरीके से दुनिया आती है उसको लेता है। उसको इस बात का ख्याल नहीं होता कि ये हलाल है हराम है, खुदा इससे राजी है नाराज है। He wants to get the dunya at any cost without realizing whether this is halal or haram, whether Allah subhanahu wa ta'ala will be happy with me or he will be angry, whether this will affect my akhirat or not. He is not concerned or worried about it. And then when he is, if he is doing some little bit work for the akhirah, this is as long as his dunya is not being affected. If he sees that his dunya and the money
the things is being affected, so he leaves the dunya, he leaves the akhirat, he leaves the akhirat if he sees any loss in his accumulation of worldly things, accumulation of dunya, accumulation of money. If he sees a loss in that, that his money is getting down, so he forgets his akhirat and he forsake his akhirat. It is as if this individual, he was doing the ita'at and the ibadat of Allah only to make sure that his dunya is being fed up properly. Do you see my keys? A big bunch of keys. So if he sees a loss in his, if he sees a loss in his dunya, in his money, so he, um, if he sees a loss in this, he forsakes his akhirat. He says, forget the akhirat, forget the work of deen, forget the remembrance of Allah, forget Allah and everything. Because he sees, because if he is experiencing any loss in his income. So basically, while working on his deen, while working on his effort of deen, and while coming closer to Allah, if for a chance his income gets disrupted, so his connection with Allah also gets disrupted. इत्तेफाकन अगर दुनिया बिगड़ जाए तो ये खुदा से भी बिगड़ जाता है. If his connection, if his income or the money where it's coming from, if that gets disrupted, his connection with Allah also gets disrupted. यानी अगर खुदा की तरफ चलते हुए दुनिया बिगड़ जाए तो ये खुदा से भी बिगड़ जाता है. His relationship with Allah also gets disrupted if his income or the money which he's making, if that gets disrupted. हमेशा दीन पर दुनिया को तरजीह देता है. He always gives the preference of money over Allah. किसी को ये मर्ज आला दर्जे का ना हो मगर मामूली दर्जे का भी हो तो बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि इस अदना दर्जे का बढ़ जाना क्या मुश्किल है, हल्का सा मर्ज जाकर बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है. If somebody has a small disease, you should not think that this is a very slight disease I have, because this slight disease can turn into deadly disease. Like for example, if people have corona, and they only have, let's say, they lost the taste, but aren't they concerned? They are worried that this might not turn into, the point where he cannot breathe, or he has to go on the ventilator. He's worried about that. He's concerned and he's worried that this might turn into a deadly disease. So he's extremely careful and he's doing a lot of effort to make sure that this disease stays, actually this disease goes away from him and he stays, this disease goes away from him because he's afraid that this small disease will turn into a major disease. Volume बढ़ा करेगा. हाँ, माइक खरीद कर ले.
कुछ तो पैदा नहीं हुई ना। अच्छा, अब बताएं कैसा है। हाँ, ठीक है। So this is what happens. He is afraid that this small disease might turn into a big disease. This is what he's worried about. So similarly, when a person has this love of dunya, this small thing can turn into a deadly disease. जुकाम खांसी अव्वलन मामूली दर्जे की होती है, फिर वही रफ्ता रफ्ता दिक और सिल की सूरत इख्तियार कर लेती है। जबकि इसको मामूली समझकर टाल दिया जाए, इसी तरह अफयून तंबाकू शुरू कलील मकदार से किया जाता है, फिर वो तरक्की करता जाता है, यहाँ तक कि जो शख्स एक रत्ती अफयून खाने वाला था, साल के बाद वो कई माशे खाने लगता है। क्यों नशे की चीज़ में खासियत है कि वो खुद ब खुद बढ़ती है। हुब्बे दुनिया में भी एक नशा है, जैसे मशहूर है 100 रुपये में एक बोतल का नशा होता है। यही वजह है कि माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत रोज़ बरोज़ तरक्की करती रहती है। इसलिए वो मर्ज़ हुब्ब दुनिया किसी दर्जे का भी हो, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। छोटा सा मर्ज़ है, आगे चल के कहानी खतरनाक हो जाती है। छोटा सा मर्ज़। Sheikh is saying the person has even, cough or cold. If he does not treat it, what happens? It can turn into pneumonia. ऐसे बढ़ते बढ़ते नमूनिया बन जाता है, कोई कोई दरा बस ठीक है। ऐसे जो लोग अफयून और तंबाकू खाते हैं, जो एक सिगरेट से शुरू करते हैं, कहाँ से चले आते हैं, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो तंबाकू और जो नशे वाली चीजें और ये गुटखा और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर क्या कहते हैं, वो कहाँ पहुंच जाती है, कैंसर में पहुंचती है। मुंह का कैंसर हो जाता है ना लोगों को, जो गुटखे वालों को होता है। हाँ, ये कहते हैं उसको थोड़ा सा खाते 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 या गुटखा और पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती है। हाँ, so that's why the people who takes tobacco or who takes these what you call cigarette, it starts always with a small, and then it increases and it becomes an addiction. It always starts small. It's not like you're going to do a big thing in the first day. It's going to start a small thing, and then it continues. It continues to a point where this person becomes helpless. People who drink wine also, they start small, but slowly, slowly, it ends up where you understand that a person eventually dies because of alcohol, consumption of alcohol. People who take drugs, they start small. They don't start big. Little bit, little bit, little bit. For fun, huh? Start for fun. Then this fun, slowly, slowly, it starts increasing. Those who used to start take little bit of drugs, then what happens? They take this, keeps on taking, takes on taking to a point when that drug stops giving them high. So then they switch to a different drug. Then they switch to that. Then they try, keep on trying that, keep on trying that. Then a point comes where he cannot even get high on that. Then he goes to a third one. Somebody was thinking crystal. They take, you get the shisha. Shisha कहते हो? शीशा कहते हैं? मैं हैरान हो गया सब शीशा भी कोई तो नहीं नहीं वो अलग शीशा ये अलग शीशा है ये भी ड्रग है सुना आई हर्ड
जो लेता है वो 1 महीना जीता है, ऐसे 3 महीने जीता है बस. They have these new drugs. The one who eats it, who takes it, they are saying that he can only live 3 months. That's it. After that, he's gone. Hmm. So why he reaches that state? It's not that he's rich. He started from small, from cigarette to drugs, and it came. And it halum majar, how chal rahi है आगे. It keeps on. So a person thinks that this is. Don't think that this cigarette is small or tobacco is small or political gutka is small. तो छोटा हल्का नहीं समझ रहा. Yes. Slowly, slowly it increases. So this is because anything, by the way, the Quran Hadith is very clear on this. كل مسكر haram. Everything which gives you high is haram. हर चीज जो तुम्हें नशा दे वो हराम है. Hadith के अल्फाज हैं. People think that somebody was asking, is drugs halal or haram? Where are you? Anything which gives you high is haram. Very clear. إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان. That's why Allah used the word fajtanibu, which is worse, which is the word which is higher level than haram. It's like, for example, you have a poison. So I'm asking the pharmacist, can I drink it like a little bit? Pharmacist, what the pharmacist says, put it over there, don't even touch it. Don't even come close to it. Stay away in the house in which this thing is there. Don't go inside there. That's how bad it is for you. This is what Allah is saying. Allah is saying that this is so bad that don't go in a house in which this thing is present. So Abdullah ibn Masud would never enter a house which has wine in it. He would not enter the house. जिस घर में शराब अफीम होता था वो दाखिल नहीं होता इस घर में. He would not enter the house. People think that this is a joke. Because it destroys your deen and destroys your dunya. It destroys both of these things. If Allah only pulls him out and if he's sincere with Allah, Allah will help him get out. Otherwise, people who get stuck, they get stuck bad. So then what happens? The Shaykh is saying, حُبِّ dunya bhi ek nasha hai. That's why the love of dunya is also an intoxicant, like the wine and the drugs. दुनिया की मोहब्बत भी एक नशा ही है. इस वक्त बुढ़ापे में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती है. हदीस में आता है. The hadith says when a person becomes old, the love of dunya and the love, two things becomes younger actually. Becomes stronger when he becomes old. आज ही मैं क्लास के अंदर ही पढ़ाते वक्त मैं तिरमिजी क्लास पढ़ा रहा था सुबह में दौरा हदीस वालों को, तो उसी में ये हदीस आई that when a person becomes old, these things become stronger और कवि बन जाती है, जबकि बुढ़ापे में तो चीज कमजोर हो जानी चाहिए. हदीस में आता है वो ताकतवर बन जाती है. When a person becomes old, it should be actually weak because it's old now. Hadith says it becomes more stronger than when he was young. बड़ा बनने की मोहब्बत और माल की मोहब्बत. The love of dunya and the love to be of his ego, it becomes more stronger in the old age than when he was young. The love of dunya and the love of ego, that becomes more stronger. That's why people, when sometimes they get to a point, older age, that they can't get their hearts ignited because of these two things. So love of dunya is just like drugs. Dunya mein, people, they go to wars, government goes to war, and people go to war, and kings, and everybody who think they're going there. What is the reason? It's for love of dunya.
Love of money. Why the people fight with each other? The love of money. Why people play politics inside the corporation? Love of money. Everything is because of this. So हुब्ब दुनिया रोज बरोज तरक्की करती रहती है. That's why this love of dunya is the same intoxicant like drugs and alcohol. Uh, and this love, as the time goes by, it increases. That's why don't take it, don't think it's a small thing. इसको हल्का मत समझो. Don't think there's a love of dunya is a small thing, because this will increase as the time goes by. A person who's taking drugs, he can see he's increasing in taking drugs. The person who drinks alcohol, he can see that I'm increasing my intake of alcohol. Love of dunya is such that a person cannot see his love of dunya is increasing, because shaitan is sitting inside the heart and is guiding him and making sure that he doesn't see that how much love of dunya is increasing inside him. जो शैतान बैठा हुआ ना साथ, तो वो उसको क्या कहते हैं, इस तरफ जहन लेके नहीं आएगा, उसका नजर नहीं आता. दुनिया की मोहब्बत बढ़ते हुए इंसान को नजर नहीं आती. ड्रग्स और शराब अगर ज्यादा लेगा तो नजर आता है उसको. ये ऐसी मोहब्बत है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है. He doesn't know that it's increasing. This is more dangerous than drugs and alcohol. ए हब्ब दुनिया के मरीज, तू खुद गौर करके देख ले, तेरी मजलिस में सुबह से शाम तक दुनिया ही का चर्चा रहता है. ए माल की मोहब्बत के मरीज, तू अपनी जिंदगी में खुद गौर करके देख ले, तेरे सुबह से लेके शाम तक सिर्फ दुनिया ही का चर्चा लगता रह चल, चल, चर्चा चलता रहता है. O lover of dunya, the Shaykh is saying, O lover of dunya, contemplate in yourself. From the morning till the evening, the only thing which you talk about is only about money. This is what your focus is. This is what you are talking about the whole day, morning to evening. This is what a person is. His mind is working. If his mind is engrossed in the love of dunya, how he can have Allah in his heart? Because his mind is inside that. So how he will have thoughts of Allah? Allah ka, if even if he is doing the zikr, his mind is with somebody else, his heart with something else, his mind is with something else. Okay, at least he is doing the zikr from his tongue, but he has given his mind and his heart to the dunya, not to Allah. And if the dunya becomes hot, then he puts his zikr beats on the side. Said, I'll do zikr later on. Let me just take care of this. If it becomes too much excitement is going on, he puts his zikr, and then he is full involved into it. दीन का जिक्र ही नहीं आता, इंसान उसी का ज्यादा जिक्र क्या करता है जिससे उसको ज्यादा मोहब्बत होती है. There is no talk of Allah in his gathering from the morning till the night. The person talks about the thing which he loves the most. What you love the most, you will talk the whole thing. Subah se leke sham tak, for example, when two people will meet, they're sitting in the doctor's office, sitting in the bus, in the office. Uh, we sit in, let's say we go to the office, we're sitting, hello, how are you? And we say, how's your iman? Is this what you say when you see your colleague? ये कहेंगे क्या ईमान का क्या है भाई? Tell me, how's your connection with Allah going on? Are you getting some new? Can you give me some new too? ये बात करते हैं, how's everything? How much money you made? What is the
hot business, what is trending? Trending है ना? Trending, trending होती है कि what is hot right now? Trending का मतलब कि आजकल क्या गरम चल रहा है? What is hot in the market? What is that? इससे अंदाजा तू नहीं लगा सकता तू हुब्ब दुनिया के मर्ज में मुब्तला है. You say, oh my dear, you can realize this, that you are diseased with the disease of love of dunya. हाय तेरा कैसा होगा, तू मरीज है और अपने को तंदुरुस्त जानता है. Oh my dear, you think that you are healthy and this cancer of the love of dunya is eating you from inside. And you have no idea what's happening inside you. अंदर से कैंसर तो मरेगा तो जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, और तकलीफ में जाएगा तो गुनाहों को माफ करके जन्नत में जाएगा. लेकिन जो माल की मोहब्बत का मरज है वो तो ऐसे इंसान को पता भी नहीं चलता, ऐसा अंदर से मारता है तो पता ही नहीं चलता. The one who is, he's eating this cancer of the love of dunya is eating him from inside, and he thinks that he's healthy. जितनी मोहब्बत दुनिया की है, आखिरत की वो मोहब्बत और उसका इतना शौक नहीं है. The love of, how much he has the love of dunya, that kind of love with Allah is not there. अपने दिल को टटोल कर देख कर वो देख ले कि दुनिया के क़याम के बाबे तो क्या क्या ख्यालात पकाता है. हम यूं रहेंगे, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर जायदादें होंगी, फिर यूं मुलाजिम होंगे, यूं ओहदे लेंगे, फिर बच्चों की यूं ओहदे होंगे, फिर उनकी ऐसी ऐसी शादियां होंगी, फिर हमारा नाम होगा. क्या क्या ख्यालात पकाता है. Saying, oh my dear, check your heart. Go and ponder inside your heart how much you have planning for this dunya, and what kind of plans do you have that we will live like this. And in this is how we will live. First we'll make effort and we will get a apartment. After apartment we'll make more effort. We all will work, and then we will get a house with a white picket fence. The white house with a white picket fence. क्या है ये white picket fence? That's what they say? In Texas, that's the goal. High school, I want a high school. White picket fence? ऐसी white picket fence. ये हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस वक्त ये बोलते कि ना, a house with a white picket fence and a dog. ऐसा ये मतलब ये एक ड्रीम होती है कि एक अच्छा घर, खूबसूरत घर और वाइट फेंस होना चाहिए. ये हर एक की ड्रीम है यहाँ की. इज द ड्रीम ओवर हियर. हमारा प्रोफेसर कह रहा है, you need, when you will get your house with a white picket fence, my kids, the professor used to say, then you will go into a corporation, and then you will get married with a rich girl, and she will be very wealthy. She will have a high degree, and she'll be working in a corporate world, and you'll be working in you will climb the corporate ladder, and she will climb the corporate ladder too. And then you have a big estate, and your name will be there. Then you'll have a butler. Butler will be there, and then your kid will go to these Ivy Leagues. You know Ivy Leagues? Your kids will go to the Ivy Leagues University. पूरी कहानी सेटिंग बना के रखी शैतान ने. बेहतरीन फिल्म चल रही है. This is the film. This is the movie which is going in the mind. This is what the Sheikh is saying. अब इंसाफ से देख लीजिए मेरे प्यारों कि आखिरत के मुताल्लिक़ भी क्या क्या आपने क्या ऐसी उमंगी की है आपने कि हम मर जाएंगे, यूं खुदा के सामने जाएंगे, यूं जन्नत होगी,
इसमें बागात और मकानात होंगे, यूं हूरें होंगी, गालिबन कभी भी उमंगें नहीं होती, यूं खुदा के सामने खड़े होंगे, कैसा खुश नसीब दिन होगा, खुदा से बातें करेंगे, अपनी शायरी सुनाएंगे और खुदा के साथ लुत्फ अंदोज होंगे, अल्लाह से बातें चल रही होंगी पूरी जिंदगी। तो क्या ये उमंगें भी होती हैं या नहीं? The Sheikh is saying, now be justify yourself. Do you have the same kind of thoughts for your akhirat? Yes, a time will come when I will die and I will stand up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how the angels will come and they will take me to the Jannah, and there will be beautiful palaces in the Jannah, and there will be beautiful house in the Jannah, and there will be my beautiful damsels who are in the Jannah, and this is how Allah subhanahu wa ta'ala will call me, and I will sit with Allah subhanahu wa ta'ala, and I will sit with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and all the pious people. And do you have the same kind of thought process which you have for your dunya? दुनिया की जितनी मोहब्बत है, अगर आखिरत की मोहब्बत इतनी होती तो जैसे यहाँ की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ दिल में ख़यालात पैदा होते हैं और उनके लिए तैयारी और कोशिश करता है, ऐसे ही वहाँ की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ भी तो कुछ ख़यालात पैदा होते और उनके लिए कुछ तो तैयारी और कोशिश क्या करता। If you had the same thoughts, if you had the same love for Allah and for the Akhirat, then these thoughts will also be there for the Akhirah. Then you will work in the same manner like a person who works in the dunya. So like he's working in the dunya in the same manner, he will work in the same manner for his Akhirat. Because he will be working hard to get these things. Because his mind process is over there. जब ऐसा नहीं है तो मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत की मरज में गिरफ्तार है. When this is not the case, then you know that you are involved in the love of dunya. You have the disease of the love of dunya. हाय अफसोस, तेरा वतन आखिरत है, मगर तूने अपने लिए दुनिया को वतन बना रखा है. Alas, your place was akhirat, but you have made dunya your country. Your country was akhirat. Dunya was not this country. This was not your country. This dunya was not your country. Your country was akhirat. But you have made this dunya as your country. This is where all of my everything in this dunya is what I need to get. Allah has said, Rasulullah says, "Ad-dunya khuliqat lakum, wa antum khuliqtum lil akhirah." This dunya has been made for you, but you have been made for the akhirah. You have your passport is Akhirat Corporation, Republic of Akhirat. This is your passport. Yes, this was your passport. Akhirat, आपको passport. You want to get the passport citizenship. Get the citizenship of Akhirat. Two passports. Passport of Jannah or a passport of Jannam. दो passport है, जन्नत के जन्नम की passport है. So a person, this is what you need to make an effort for this. अपने लिए और अपने हर अजीज के लिए दुनिया ही दुनिया चाहता है. That's why what he wants for himself and for his beloved ones, he just wants dunya for them. He wants dunya for himself, and he wants dunya for his wife, dunya for his kids, dunya for his brothers, sisters, parents, uncle, aunt, nephew, niece, everybody. He wants dunya for himself and for all the people around him. He wants that they also should get the dunya. He has no concern for the akhirah. सबके लिए तू दुनिया चाहता है.
इसके आप गौर के लोगों की जिंदगी देखें, लोगों की जिंदगी देखें कि दीन पे भी चल रहे हो तो चाहते हैं कि सब अपनी औलादों से अपनी दुनिया सेट होती रहे, आखिरत की उतनी फिक्र नहीं, बस आखिरत उतनी हो जो बेसिक हो, मिनिमम, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत टच करंट मिलता रहे, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत, पूरी पूरी दुनिया में लगे रहो, फख्र से कर रहे हैं हमारे बच्चे ने ये किया, बेटे ने ये किया। हमारे कभी लोगों के अंदर बैठता हूँ तो सब यही कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा, हमारे यहाँ भी यही चलता है। सब क्या, सब क्या यही है, सिर्फ दुनिया का निज़ाम ही ऐसे ही है। आपके सारी दुनिया के हर कोई बैठ के पूछे आपके बेटे ने क्या किया, जी मेरा एक बेटा मुत्तकी है, और एक मेरा बेटा जो है ना ताल्लुक मोहल्ला वाला है, ये बाबा जी पागल हो गए, ये बोलेंगे। तो अब दीनी चीजें भी डिग्री की तरह बन गई है, दीनी चीजें भी है ना, उस पर भी जैसे डिग्री की तरह करते हैं उसको भी ऐसे ट्रीट करते हैं। So what happens is that he's saying when you sit, he wants dunya for himself and for his family. That's why when a person sits, when you meet in the parties, oh, these are my 4 kids. One is this engineer, doctor, philanthropist, and he's a pharmacist. And this is in this matter. They don't say that this is the one who has a connection with Allah. He's the one who has taqwa. He has. These are the talks. If somebody starts saying this, they think this guy's crazy. He's crazy. पागलपन की बातें कर रहे हैं। ये बताओ वो दुनिया में they want is that what he has done in dunya. Forget akhirat. What he has done in dunya. You tell me that first. Isn't it true? सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आपके बच्चे दुनिया में क्या कमा है? जी मेरा बच्चा सुबह से शाम तक मस्जिद में बैठा, पागल है, छोड़ दो उसको, ये बोलेंगे ना। कोई ये अम्मा ये बोलेंगे जी मेरा बेटा सुबह से शाम तक मस्जिद में होता, थोड़ी बहुत दुनिया कर लेता, अच्छा जी तो फिर पागल हो गया, ठीक है छोड़ दो। Somebody, the father says, my son, he stays from the morning to the night in the masjid. That's crazy. पागल क्या नहीं, पागल नहीं। ये बताओ ये दुनिया कमाता है यानी असल बुनियाद ये है कि दुनिया कितनी कमाता है। मेन थिंग इज how much cash he's getting, how much grants, how many grand he has. ये है सबसे पहली। आप जैसे वो जो बुजुर्ग कह रहे हैं कि जैसे महफिल में बैठते पूछेंगे भाई आप अच्छी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सही है, मुझे तो कह रहे हैं सब, क्योंकि दिस इज व्हाट ही वांट्स। This is what happens. When you sit, this is what people say, what your son has done. Oh, he's staying in the masjid, crazy guy. You need to just tell me how much he is in the dunya, how much cash he's making. Yeah, he says, how much son your cash makes? I said, only this much. My son makes this much. Your failure compared to me, I'm more successful than you. See, आप थोड़े कामयाब हैं, हम ज्यादा कामयाब हैं। I was once in a gathering. Amazing things I see, many things. तो एक पार्टी के अंदर जाने का इत्तेफाक तो बैठा था, बच्चे इतने करते हैं, उन्होंने कहा कि कितना करता है इतना, मैंने बच्चे ने 5 मलगियां बनाई हैं, my son has made 5 मलगी क्या पैलेसेस, 5 plazas. This is what I have done. तुम्हारा बच्चा तो झक मारा जो मेरा बच्चा कर रहा है। So your son is, my son made 5 plaza. What your son?
अच्छा, amazing thing is this. पता नहीं ये लोग समझ ना जाए. So actually, not five, many. Remembered many he made. Then what happened? I will not go into the details. हुआ ये कि उनके किसी रिश्तेदार ने वो सारी मलियां खा गए. पूरे सारे. मुझे आगे कहा one of his relatives took all of that, and he's taking all the money from him. He's taking, he gets a lot of income from that. So all that income, his relative took that. और उनके अब्बा कह रहे थे मेरे बेटे ने इतने बनाए अब क्या कहें. मैं ज्यादा तफसील अभी नहीं जाऊंगा. हकायक हैं. They are the realities. He has made so much, and then his father, my son made so much. Now one of his relatives took all that. Now, and he's getting all the rent from that. So when he goes back to his country, he has no place to stay. He was saying to me once that I was staying in the servant quarter of his own palace, which he made, a room for the servants. He was staying in that room. मुझे कहा था लोग आके सुनाते हैं कहानी अपनी. People can tell me वजीफे आते हैं सुना को वजीफा दे. People come and tell me that this would happen to me. Please, मौलाना तारिक जमील साहब जी कहते थे मैं डॉक्टरी पढ़ने जाता था मेरे बाप ने बता दिया होता डॉक्टरी पढ़ने से निकल जाते कहते हैं डॉक्टर के पास कोई नहीं कोई. But these are the things which happens. These are the realities. ऐसी अनहोनी बातें नहीं, हक़ाइक़ हैं ये. These are the facts which are happening all around us. जिसने इतनी मेहनत की और वो सारा का सारा उसका रिश्ता लेके चला गया. All of this his relative took him. If he knew if his relative is going to take him, would he work so hard? पूरा इसके और छोटी मोटी रकमें नहीं, बड़ी बड़ी रकमें ऐसी नहीं सुनोगे परेशान हो. ज्यादा बताना नहीं चाह रहा मैं, समझ ना ले. Not a small amount, big amounts, big amount, बड़ी बड़ी रकमें. उनको अगर पता होता ये खुदा की सजा थी कि तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई क्यों. This was a punishment from Allah that why you got involved in this dunya this way. At the expense of deen, at the expense of akhirat, you got involved in this dunya, this is what you will get. तो खुदा की तरफ से punishment होती है. This is a punishment from Allah. This is just a little jerk. You give a little shock. Excuse me, get up. Somebody sleeping, for example, when it's deep sleep, somebody has a deep sleep. कोई नींद में सो रहा है, आप I'm talking in Urdu also because there's some people who don't understand English, online. Somebody who is asleep, जो नींद में सो रहा है उसको बात में थोड़ा शॉक देते हैं. भाई जाग जाओ. तो अल्लाह में ऐसी शॉक देते हैं ये. जिनके ऐसे ऐसे नुकसानात हो ना, उनको अपनी जिंदगी के रविश को चेंज करना चाहिए. अगर वो सुन रहे हैं, अगर उन पे कहानी फिट हो रही है तो उनको अपनी जिंदगी के रविश से तौबा करके अपनी जिंदगी का रविश को चेंज करना चाहिए, वरना बड़ा झटका पड़ेगा. Those who are listening and this falls on them, this scenario, this is shock from Allah to change their lifestyle. मेरे वजीफों से कोई काम नहीं होगा. अगर आप तो वजीफा दें कि वो वापस आ जाए, खुदा ने डिसाइड किया हुआ तो मेरे वजीफे काम करेगा. Somebody said, please give me a wazifa so I can get this back. Allah has decided you won't get it. And sometimes some people are in this precarious situation that there's no way they can get it. They themselves have signed off their houses on the names of their relatives.
There's no way he can get it back. He himself has signed off. उसने खुद ये किया. अल्लाह ताला इंसान को तो वजीफे से वापस आने वाली चीज़ नहीं है, खुदा की तरफ से एक शौक है ताकि इंसान वजीफा ना पढ़े बल्कि जिंदगी के रविश को चेंज करे. This is not is going to get fixed up because of the wazifa or some amal, so I can get my cash back. It's not ATM cash back, you know. You're buying, they ask you cash back, you know, give me 20 or kar dena. They say cash back. Cash back है ये. खुदा की तरफ से वार्निंग है. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. This is a shock so that you come back towards Allah. अल्लाह ताला इंसान को ये शौक देते हैं ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी के रविश को चेंज करके. हमारी नज़र में दीन ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लूँ, ज़कात दूँ, हज कर लूँ, उम्रा कर लूँ, बस. उसके बाद सदका खैरात कर लूँ, थोड़े से पैसे कुछ मस्जिद को दे दूँ और बस थोड़ा बहुत ये कर लूँ तो बस ये मेरे लिए काफ़ी है. This is what this person, you know, he has made that dunya as his main and akhirat as a side business. दुनिया उसका असल और आखिरत उसका साइड बिजनेस है, थोड़ा बहुत ऐसे. तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया में इसको मारते हैं. कुरान कहता है ताकि वो खुदा की तरफ रुजू करे, ताकि उसकी रविश चेंज हो. अल्लाह कह रहे रविश चेंज हो, मौलवी साहब उसको वजीफे दे रहे हैं, मौलवी साहब भी फंस जाएंगे. अल्लाह में कह रहे रविश चेंज करो, कर रहे वजीफा लो, मौलवी साहब की हवा जाएगी टाइट. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, is giving him shock, so he can change. And the Mawli Sahib and the Imam Sahib is giving him some amal so he can get this thing. No, but it's not the thing which is amal. You need to change your lifestyle. This lifestyle. If you won't, then second shock will come. Third shock, second will be worse than the first. Third will be worse than the second. Then, if the heart is completely black, then Allah stamps this heart and opens the dunya on him. Now, this person has been, destined for Jannah. पूरा straight. अब उसको खत्म छुपा हो गया. कुरान ने कह दिया, खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा. तो कुरान कहता है, सवाउन अलैहिम अंज़रतुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून. तुम चाहे बोलो मत बोलो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मोहर लग चुकी है, अब तकरीरें काम नहीं आएंगी. They have come to that level. तो उस मुकाम तक वो पहुंचे कैसा है, इसका नहीं गौर करते. मैं अभी उर्दू में कर रहा था, इंग्लिश में कर रहा था, किसमें कर रहा था? इंग्लिश में कर रहा था, उर्दू में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में किया. तो होता ही है कि इंसान इस मुकाम तक क्या होता है, पहले झटका आएगा, उसमें इंसान ने तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगी के रविश को तब्दील नहीं किया, फिर दूसरा झटका आया, उसमें तब्दील नहीं किया, फिर तीसरा झटका आया, उसमें भी अपने आप को तब्दील नहीं किया. फिर जब ये झटकों के बाद भी इंसान जब नहीं करता, दिल बिल्कुल काला हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए वो पूरी दुनिया खोल देते हैं. चलो ले ले. फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै. Allah opens the whole dunya to him after the shock if he doesn't change. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة إذا هم مبلسون. खूब सेट हो गया, أخذناهم बग़ता. Then अचानक खुदा का कोड़ा आता है. तो क्या करता खुदा का कोड़ा? फ़क़ुतिअ दाबिरु القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. अल्लाह ऐसा मारते से कमर तोड़ देते हैं. कुरान कह रहा है पहले झटके में तब्दील नहीं हुआ, दूसरे झटके में तब्दील नहीं हुआ, तीसरे में तब्दील नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको मारबा मौका दिया, सुनाया हर चीज़, ज़िंदगी के रविश को चेंज नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसको झटके देते हैं. तो जब बिल्कुल ही गुनाह इसी रविश पे चल रहा है तो अल्लाह ताला उसके दिल को मोहर लगाकर तो कहते तुम बोलो या मत बोलो, अब ये उसी लाइन का हो गया, अब ये तो जहन्नम के काबिल हो गया. सवाउन अलैहिम अंज़रतुम अम लम तुंज़िरहुम. चाहे तुम उनको कहो या मत कहो, अब ये केस वहाँ का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, हमने मोहर लगा दी है. इसलिए हमारे शेख साहब जो है वो ये कहते हैं कि हर एक को मत बिठाओ, देख लो
जिसकी किस्मत में जन्नत लिखी हुई है उसको बैठा सामने, उसके ऊपर मेहनत करो। जिसकी किस्मत ही जहन्नम में, तुम उसमें क्यों बैठ करो, उसको तुम बिठा क्यों रहो? तौबा करे इंसान तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज है ना, कि तौबा तो करे। जो बजिद है कि मैं सही हूँ तो ठीक है, रहो फिर वैसे। That's why the Sheikh, he said, tells me, he said that you don't need to make everybody sit, make those people sit who are destined for Jannat. Those whose heart has been stamped, they are for the Jannah. The Quran is saying, because the Quran is saying very clear, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ. तुम कहो या मत कहो, ला युमिनून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी इसलिए बात की हुज्जत के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he talked to Abu Jahl, Abu Lahab for हुज्जत, हुज्जत के लिए बात करते ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would talk to these people so that the हुज्जत can be done on them. खत्म हो गया। हाँ, तो इसी वास्ते कुरान ये कहता है कि वो एक झटका, दो झटके, 3 झटके भी इंसान तब्दील नहीं हुआ, अल्लाह पाक उसको खोल देते हैं, फिर करके फिर उसको जहन्नम में डालते हैं। तो पर्सन ही डजंट चेंज आफ्टर 1 शॉक, 2 शॉक, ये सब शॉक्स होते हैं अल्लाह की तरफ से, तो इंसान तब्दील हो जाए जिंदगी को। ऑल द लॉसेस इन हिज बिजनेस, सो दैट ही शुड चेंज, he change his lifestyle. And once the lifestyle is changed, after that, Allah subhanahu wa ta'ala wants him, because it's a common thing, it's a common sense. Your son, if he starts saying that I have more love with your enemy, that you are doing everything to your son. And he says, no, I love your enemy more than you. So would you like that? You are the king. जैसे बादशाह है, अब उसका बेटा कह रहा है मुझे उसके दुश्मन से ज्यादा मोहब्बत है, आज उसकी कर रहा हूँ, तो बादशाह छोड़ेगा उसको? समझाएगा, डंडा भी देगा, पकड़ेगा उसको भी। तो अल्लाह ताला इंसान को अपने लिए बनाया, वो उसके दुश्मन की रविश पे चल रहा है। अल्लाह झटके, भाई इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं आता फिर अल्लाह पकड़ते हैं उसको। तो इंसान की अपनी जिंदगी में जो लॉसेस हैं, if the losses which comes in his life, this is a little shake up. ये आपके लिए शेकअप है और मेरे लिए शेकअप है, हम सब के लिए शेकअप है, ताकि हम खुदा की तरफ रुजू करें, हमारी जिंदगी की गाड़ी हटे नहीं खुदा की तरफ से। These are the shake-ups so that our life should not turn towards ghairullah, besides Allah. अल्लाह की तरफ हमारी जिंदगी का रुख है। फिर अल्लाह पर आप कहेंगे भाई अल्लाह वालों के पर, अल्लाह पाक बाज़ वक़्त अल्लाह वालों पे भी हालात डाले, देखते हैं। अभी सब बुजुर्ग कह रहे हैं ना, देखते हैं ये कहीं दुनिया की कुछ रही सही कसर भी है या अंदर, या हमारा पक्का हुआ है, पक्का है बस ठीक है आ जाओ। पूरे सहाबा को थोड़ा झंझोड़ के उनका सब साफ कर दिया। अल्लाह ने कहा भाई कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास है, नहीं हमारे पास या आपके पास, अल्लाह के पास जाएगा, ठीक है भाई जब दे दो उनको। ऐसे ही किया ना, फिर कसर फिसर के बांध दिए, उनकी बेटी उनकी बांधी बन गई। इतना दिया अल्लाह ताला ने सैयदना उमर के ज़माने में, एक एक बालिश उसका जो टुकड़ा था 12,000 दीनार का था, उसके कालीन का टुकड़ा, ऐसा अल्लाह ने बगैर कमाई दिया वो भी। So Allah subhanahu wa ta'ala, what he does is in the beginning, somebody, so several, you see pious people also go through some tough times. Well, Allah wants to check to make sure if he removes all the dunya from him, where is his focus? Is akhirat, Allah, or something else? If he's towards Allah, Allah says, okay, I'll give you everything what you want. Allah gives it according to his will, like he gave to the Sahaba. Can't even imagine how much Allah gave it to them. So in Mecca, when they were coming to Medina Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala was shaking them up and checking. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. We'll check. ولقد فتنا الذين من قبلهم. We'll check. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. To see who is truthful with me and who is liar with me.
Okay, he's truthful with me. Okay, Allah says, okay, give him everything according to how much Allah wants in the dunya. Akhirat reward is even in the akhirat. This is just barakat. This is not the reward in the pious man doesn't get the reward from Allah in the dunya. He only gets blessings. Reward is in the akhirah because dunya cannot hold the reward which Allah has made for the pious man. दुनिया में तो आपको उसका बदला मिल ही नहीं सकता, बरकत मिल सकती है. ولما القرآن कहता है ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. चलो आपको बरकतें खोल देगा. जन्नत का क्या भरने के बाद क्या कहा? जज़ाअम बिमा कानू यअमलून. ये उनकी जजा थी क्यों ना अमल किया. वहाँ रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड तो मरने के बाद है, दुनिया में बरकत है. रिवॉर्ड इज व्हेन यू डाई और ब्लेसिंग इज इन द दुनिया. दुनिया में नेम बरकतें मिलेंगी आपको और क्या कहते हैं मरने के बाद इसका अजर मिले, इसकी जजा, अच्छे अमल की जजा. और वल्लज़ीना आजरू फी सबीलिल्लाह लनुबव्विअन्नहुम फी दुनिया हसना. कुरान कहता है दुनिया में हम उनको हसना देंगे. वला अज्रुल आखिर, और असल तो अजर आखिरत के वहाँ मिलेगा, बरकतें मिल जाएंगी. जजा तो यार दुनिया छोटी है ना. मतलब मैंने आप कह रहे हैं आप अल्लाह के पास जाएं, ये बोतल लेके कहें मुझे 1 लाख गैलन आपको हम क्या कहते हैं, या फर्ज करो मैं क्या कहते हैं अपने जो मेरे जेब इतनी है, ठीक है ना, आपके पास $1 मिलियन कैश है. अब इसमें 1 मिलियन आ सकता है? नहीं आ सकता. आप देना चाह रहे हैं 1 मिलियन, जेब छोटी है, क्या तो भाई बड़ी जेब लेके आओ, देंगे. ऐसी है. It's like, for example, somebody wants to give you $1 million cash. So you go to him, he says, where are you going to keep it? I said, this is. I said, my dear, this is too small. This cannot take 1 million. Bring a suitcase. Then we'll give you. Because this is too small to hold 1 million. This is too small. 1 million is not here. You'll get, okay, I'll give you some little bit just for the barakat. अल्लाह ऐसी करते हैं, दुनिया में बरकतें देते हैं और मरने के बाद जज़ा है. अच्छा भाई इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है यहाँ से कल नीचे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ से पढ़ेंगे कल. हाय अफसोस तेरा वतन आखिरत है, मगर तूने अपने लिए दुनिया को वतन बना रखा. अपने लिए और अपने हर अजीज की दुनिया ही दुनिया चाहता है और दुनिया से कुछ ऐसी दिल बस्तगी है गोया तुझको हमेशा यही रहना है. कल इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रही तो यहाँ से पढ़ते इंशाल्लाह. डब्बा बंद कर दिया. ठीक है बंद दो. أستغفر الله الذي لا
कि तौबा हम क्या कर किसके लिए कर रहे हैं? जो जिंदगी गलत रविश पे गुजारी उसकी तौबा। What is this tawbah? The wrong way of life which we led. We're doing tawbah for that. You know, when it's tawbah for the sins, of course it is there. But this is tawbah for the wrong way of life. The way of life which we led, on which our focus was not Allah, it was money and the worldly things. So we're doing tawbah from this. I will change the way of our life. We are, our life will be heading towards Allah. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بس مرتبة قل هو الله أكبر. يقول الله 10 times. قل هو الله الله أكبر. قل هو الله أكبر. يا الله اسكى صواب حضور صلى الله عليه وسلم سيدنا علي عليه السلام نوح عليه السلام شيث عليه السلام إبراهيم عليه السلام سليمان عليه السلام داود عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام خضر عليه السلام الياس عليه السلام حمزة رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها الحسن رضي الله تعالى عنه الحسين رضي الله تعالى عنه عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه وهذا الشيشتي رحمة الله عليه والياس سلطان باور رحمة الله عليه محي الدين ابن عربي رحمة الله عليه والياس صاحب يوسف مولانا ورسول صاحب مولانا سيد حسن مولانا عيسى صاحب مولانا قسم صاحب ابو عاصم بھائی کو دادا کو دادی کو نانا کو دادا کو میں ڈاکٹر عمران احمد اللہ صاحب اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے حضرت عبدالوہاب صاحب کو مفتی زیام صاحب کو اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے لا إله إلا الله محمد
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, 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 ilaha illallah, la ma'buda illallah, la 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 ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ma'buda 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 illallah, la ilaha illallah,
لا معبود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا مقصود 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 إلا الله لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله محبوب means हमारा महबूब अल्लाह की जात बन जाए महबूब means our most beloved the one who loves the most only should be only Allah لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله 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 لا إله إلا الله لا محبوب
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو 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 فاتخذه وكيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر مدور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كافي الورى إصلاح الظلم، جميع الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جند الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم، صلى الله على حبيبه نبينا محمد وآله وسلم، صلى الله على حبيبه سيدنا 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 محمد وآله وسلم،
صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم 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 صلى الله على حبيبه نبينا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجزه عنا وعن والدينا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه
وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم رب هب لي من لدنك وليا هب لي من لدنك وليا رب هب لي من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم باعد بيني وبين الشياطين كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آيس مني كما آيست من رحمتك وأقنطه منا كما أقنطته من رحمتك يا خالق الكون والمكان اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عصري نورا وفي لحمي نورا وفي شحمي نورا في عظمي نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن أمامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا اللهم اجعلني نورا واعطني نورا وعظمني نورا واجعل في نفسي نورا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشف الوالد والوالد اللهم اشف الأهل اللهم اشفنا جميعا اللهم اشف عزير وأباهما وارزق شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين اللهم اشف أبو نبيل وارزقهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا.